बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते को मैं तरबूर वली का नाम देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि वो भाई हैं और कुछ लोग उनको दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि न पाकिस्तान की बदअमनी से अफ़गानिस्तान महफूज रह सकता है और न अफ़गानिस्तान की बदअमनी से पाकिस्तान महफूज रह सकता है। और अगर अफ़गानिस्तान में अमन आया तो उससे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होगा। लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात आवाम की सतह पे अगरचे खुशगवार रहते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे वो बहुत कम सही और दुरुस्त सिमत में गामज़न रहे हैं। जनाब डॉक्टर अशरफ गनी साहब जब अफ़गानिस्तान के सदर बने तो पाकिस्तान में उनसे बड़ी खुशगवार तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी। वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, GHQ भी गए, वहाँ शुहदा की यादगार पे फूल भी चढ़ाए और दोस्ती के एक नए सफ़र का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान में भी उनकी सताइश होने लगी और वो भी पाकिस्तान के बारे में नए ख़यालात का इजहार करते रहे। लेकिन हमने देखा कि कुछ अरसा बाद न सिर्फ ये कि वो ताल्लुकात खुशगवार नहीं रहे, बल्कि उनका लहजा पाकिस्तान के बारे में तल्ख़ हो गया। पाकिस्तान की तरफ से उन पे और उन पे हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगता रहा कि वो उनकी हुकूमत पाकिस्तान के मफादात के बरक्स इंडिया जैसी ताकतों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे हैं। 22 मार्च 2018 को NDS ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहाँ दिए और वो कहाँ है? पहले मैं उनसे पूछता हूँ, फिर आपके साथ भी इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला इनका धरना था, उसके लिए राह ने इनको कितने पैसे दिए, किस तरीके से पहुंचे और कहां इन्होंने इस्तेमाल किए? 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कौंसलेट है, उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कौंसलेट में गया, उससे मुलाकात हुई, साथ एक दोस्त भी था, कितने पैसे दिए और वो पाकिस्तान कैसे आए? 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कौंसलेट है, उसने तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी, उसके लिए कितने पैसे दिए और कहाँ आए वो पैसे और किस तरीके से आए? मोहम्मद इस्माइल बोन जोंदोन टीवी का PTM से क्या ताल्लुक है, ये भी बताएं। जबकि अफ़गान सदर ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि पाकिस्तान ने उनके साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए और उनका ये भी इल्ज़ाम रहा कि तालिबान को पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रही है। इस दौरान पाकिस्तान में सार्क कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा था, लेकिन अशरफ गनी साहब इतने नाराज़ थे कि उन्होंने सार्क कॉन्फ्रेंस में भी शमूलियत से इनकार कर दिया। और ज़ाहिरी बात है कि उसके बाद पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तानी हुकूमत का गुस्सा भी हद से आगे बढ़ने लगा। कोशिश हो रही थी खुसूसन पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल किए जाएं, उनकी हुकूमत के साथ अमन के सिलसिले में नए रास्ते तलाश किए जाएं। अमेरिका भी अब ये एतराफ़ कर रहा है कि तालिबान को मुफाहमत के रास्ते पर लाने के लिए पाकिस्तान मुमकिन हद तक ताउन कर रहा है। बिलाखिर पाकिस्तानी हुकूमत इसमें कामयाब हो गई कि डॉक्टर अशरफ गनी को पाकिस्तान आने के लिए आमादा किया। न सिर्फ ये आमादा किया, बल्कि अशरफ गनी साहब का अब कहना ये है कि पाकिस्तान के साथ माजी को बुला के दोस्ती और प्यार और मोहब्बत के एक नए सफ़र का आगाज़ किया जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया। हम भी उनकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि वो नाराज़ क्यों थे पाकिस्तान से, अब पाकिस्तान से राज़ी कैसे हो गए हैं, खुश कैसे हो गए हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और बिलखसूस आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर हुकाम से उनकी क्या बातचीत हुई है, मुस्तक़बिल के लिए उनके क्या इरादे हैं, कतर में अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात को वो किस नज़र से देखते हैं और वो कितने पुरुम्मीद है कि तालिबान और उनकी हुकूमत के माबैन मुफाहमत हो जाएगी। तो मैं मशकूर हूँ जनाब अशरफ गनी साहब का कि एक बार फिर
उन्होंने अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए मेरे प्रोग्राम जिरगा का इंतखाब किया। तो आइए नाजरीन, मोहतरम डॉक्टर अशरफ गनी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ गनी साहब, वेलकम टू पाकिस्तान, और दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान में आमद में। Bismillahirrahmanirrahim. Safi, thank you for the welcome. My salams to all the people of Pakistan, and particularly thank you for the opportunity to be able to have an exchange and to engage the people of Pakistan who have a commitment to freedom, who have a commitment to regional cooperation, and who have a commitment to cultural understanding and to overcoming. This is a common agenda, and I hope that we can engage in a very constructive conversation. इंशाल्लाह। प्रेसिडेंट साहब, जब आप अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट बने, आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, आउट ऑफ द वे आप भी पाकिस्तान के साथ गए और पाकिस्तान ने भी आपके साथ आउट ऑफ द वे हिस्ट्री को बुला के जाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आप बहुत नाराज़ रहे पाकिस्तान से। तो पिछले 2 साल से पाकिस्तान की हुकूमत की ख्वाहिश और कोशिश रही कि आप पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएँ, लेकिन आप तशरीफ़ नहीं ला रहे थे, शायद दुखी थे। अब आप पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएँ, तो कैसे आप इस सफ़र के लिए आमादा हुए? क्या आपको पाकिस्तान के अप्रोच या सोच में कोई तब्दीली नज़र आ गई है? I see an opening. The Prime Minister is focusing on poverty reduction, on a deep examination of policies that have not benefited Pakistan. He has embraced regional cooperation and connectivity. I see that intentions are changing, and fundamentally I see that a sovereign Afghanistan, a stable Afghanistan, a prosperous Afghanistan is being seen to complement and help Pakistan in this agenda. Our problem in the past is very simple. I represent national interest of Afghanistan. My interest is not subordinate to any other interest. We are a people with a history of defying empires, world powers and others. We will never be subordinate. But as equal, you will not find a better partner. What we are engaged in now is not to discuss the past, but policies which were not thought through, like strategic depth. What does it mean for a nuclear power to look at strategic depth in territory? Strategic depth comes from connectivity, from economic, from not having poverty, from having the highest education, not the lowest education. So it's the internal circumstances in Pakistan that makes me hopeful that we can engage. Second, global circumstances are changing. Uncertainty is the norm in the world. If regions do not cooperate and work together, we will be losers. And in this regard, the emphasis of both the Prime Minister and General Bajwa, your Chief of Staff, that regions grow, not countries, is extremely important for us. In short, I see that the examination of Pakistan's national interest is changing, and that national interest is now in cooperation. Within an agenda of cooperation, our national interest is a lot of room for flexibility and for working together. ये जो रीजनल कनेक्टिविटी, उसके लिए अफ़गानिस्तान की और हर्ट की हैसियत रखता है। वो जो इकबाल ने भी कहा था कि आसिया यक पैकर आबो गिलस्त मिल्लत अफ़गान दरा पैकर दिलस्त। लेकिन हमने देखा कि पिछले सालों के दौरान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की ट्रेड उल्टा कम हो गई, आधी रह गई।
तो सीपेक के लिए भी अफ़गानिस्तान इंस्ट्रूमेंटल, सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी के लिए भी इंस्ट्रूमेंटल। तो अगर अफ़गानिस्तान में क्या आप पुरुमीद है कि मुकम्मल अमन आ जाएगी और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात इतने बेहतर हो जाएंगे कि हम उस रीजनल कनेक्टिविटी का ख्वाब पूरा कर सकें? Of course, but first, why is trade declined? Because Karachi, it takes 30 to 40 days, up to 30 to 40 days. On average, it takes 14 days for our goods to be processed. And there's a mentality there that there's a monopoly. It isn't. Now we have ports from across the world. At the time that that mentality prevailed, Afghanistan depended. There was a monopoly situation. Can anyone in Pakistan tell me that Karachi port is free of corruption or free of mismanagement? If Karachi wants to compete with Baku or with Batumi or with Chabahar, it has to change. Processing of our goods. We agreed to scanning. The scanning machines don't work. We agreed that only 5% of our goods be physically there, up to 85%. It's not at the high level, it's at the small level that problems arose. So Afghan merchants are working with their money. That's the past, that's the present, but now there's an agreement. Or second instance, wasn't Torkham and Spin Buldak shut on us for a month? Did anything happen in Kabul? Was there any shortage? Well, we had diversified. Kazakh wheat, who lost? The traders in Khyber Pakhtunkhwa, in Balochistan, and Punjab, as far as Sindh, because we had diversified. Kazakh wheat. And the patients and students of Afghanistan suffered also. Exactly. So an agenda of lose-lose is not in anybody's interest. Now, fortunately, we have agreed to open Torkham 24 hours a day. You will see the impact. Or Waga Atari, there's 6 kilometers. Our trucks were being forced to unload for 6 kilometers, but the damage to us was enormous. Now there will be agreement that our trucks will go straight to India. This is going to change things. The fundamental issue is that connectivity is a system. You need to embrace rules that are predictable, reliable, and when disputes arise, there are dispute resolution mechanisms. At the upper echelons, we agree quickly, and this time I think we've agreed fundamentally, but it needs, the devil is in the detail in implementation. The other issue is that for Afghanistan, I embraced Iqbal, because both, what he said was, Asia is but a body of water and earth, of which the Afghan nation is the heart. From its discord, the discord of Asia, from its accord, the accord of Asia. I hope every Pakistani and every Afghan embraces Iqbal as I have. Okay. Because in the middle, we are located in the middle. A country that is located in the middle must have good relations with everybody around it. So we see good relations with Pakistan, and beyond that with South Asia as essential to our national interest, and are now investing very heavily in एक्सेलेंसी, आपने connectivity. इकबाल का जिक्र किया, आप बाज़ औक़ात इकबाल के फ़ैन लगते हैं, और क्या मेरी ये मालूमात दुरुस्त है कि लाहौर जाने और इकबाल के मज़ार पे हाज़री की ख्वाहिश आपने ख़ुद ज़ाहिर की थी? जी. अच्छा. Yes. Iqbal came to advise King Nader Shah on formation of Kabul University. The idea of Kabul University was conceived with Allama Iqbal. You know that the marble in Allama Iqbal's mazar is from Afghanistan, a gift of the Afghan people and the Afghan government. It's the best Carrera quality Italian marble from Chishti Sharif, the same area that the Sufis, the Chishti order, both in Ajmer and Multanif come from. Iqbal understood Afghans. And besides, you know, he's one of the most significant poets of Dari language. And can one really claim to understand Iqbal without understanding Dari and without understanding Afghanistan in his place? ठीक. आप माहिर मईशत भी हैं,
अफ़गानिस्तान की इकॉनमी को इस रास्ते पे लगाने में आपका बुनियादी किरदार भी था। अभी मैं कल देख रहा था कि 2 पाकिस्तानी रुपए 1 अफ़गानी के बराबर हो गए। तो मैं बाज़ वक़्त मशवरा कि इमरान खान साहब को आपसे मशवरा करना चाहिए। और आप कनेक्टिविटी और ट्रेड पे बहुत ज़ोर देते हैं। इस रीजन में जो कनेक्टिविटी के लिहाज से इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो चाइना का बेल्ट एंड रोड कंसेप्ट है, और फिर उसका अहम जुज़ वो सीपैक है। लेकिन एक कंसेप्ट ये भी है कि शायद अफ़गानिस्तान में ऐसी फोर्सेस बैठी हुई हैं अमेरिका और ये कि जो सीपैक की कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी चाहती हैं। अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट की हैसियत से आप सीपैक को किस तरह देखते हैं, और क्या आपका मुल्क चाहता है कि वो सीपैक का हिस्सा बने? Our fundamental interest is in connecting South Asia and Central Asia, West Asia and East Asia. Anything, Ms. Safi, in history, there is only one precedent for what is happening in Asia today. That is the integration of the United States in 1869. In 1869, the Atlantic and the Pacific railways were joined. It turned a geography into a continental economy, and the Suez Canal was opened on the same day. Asia is in its greatest transformation. We were a geographical and cultural idea. Now we are becoming an economic continent. Afghanistan wants to be part of this. Every major effort that complements and connects every mile of railway, highway, fiber optics, we have no opposition. We want to complement and connect. So the agenda is to be able to find the most efficient way, the most complementary way. And we will provide access to Pakistan, to Central Asia, in return for providing access to South Asia, because we are looking as far as Bangladesh and Sri Lanka, not just India, because this continent, unfortunately, is the South Asia subcontinent is the least connected region of the world. And in connectivity, we'll find. The key is to be able to depoliticize economics. If we want true poverty reduction, we have to have predictability. It's not going to happen overnight, but that aim will enable us to pursue a consistent. लेकिन अफगानिस्तान को न सिर्फ ये कि सीपैक पे एतराज़ नहीं है, उसको वेलकम करता है, उसका हिस्सा बनना चाहता है. Of course, we are connecting everybody, and what we are doing is Belt and Road has been welcomed. I have excellent relationship with President Xi Jinping, but I have also excellent relationship with the Prime Minister of India. We are not enemies to anyone. The goal of Afghanistan is to be a platform for cooperation. We've suffered for 40 years. You know it, you've written on it. From confrontation. We want to remove confrontation, and on economics, there's a ground for cooperation. But war is enemy to each of us. Yes. अफ़गानिस्तान में जब तक अमन नहीं आता, न कनेक्टिविटी का ख्वाब पूरा हो सकता है, न माशी खुशहाली का हो सकता है, न सेंट्रल एशिया तक एक्सेस हो सकता है. उसके लिए ज़रूरी है कि तालिबान और आपकी हुकूमत की मुसालहत हो. अभी तक आपकी हुकूमत को ये शिकायत रही कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है. उस हवाले से आपको कोई चेंज नज़र आया है? Sure. But the first thing, the assertion is not true, that because of war we cannot change. We've connected to Central Asia. When I became president, our trade was practically non-existent. Today our trade with Central Asia is higher than our trade with Pakistan and Iran. We had one dry port, now we have 3. Every day, we opened up the Lapis Lazuli road, we're opening the new Silk Road back to China. So our relationship with Central Asia is an example of what every neighbor can be. Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and beyond that, the Caucasus. War should not be used as an excuse not to build. We're building. And we're harnessing our water. Our key approach, Safi, is our internal assets should be valued. So my whole thing, and that's where I've succeeded in changing the discourse, people are now looking inside. I don't want to build for Afghanistan with foreign aid.
I want to build it with Afghan resources. And Allah Almighty has been extraordinarily kind to us. We are extremely wealthy. For a people of 30 to 35 million, we can go to prosperity. But coming to peace, peace is essential because it takes a toll. In the past, there was a misperception in certain circles that the Taliban could win, that the government of Afghanistan would collapse, that our forces would not hold. Well, I have a surprise for you. There's no risk of collapse of the Afghan state. You've seen our forces are taking district after district. It took change because previously the forces were not inspired, they were not invested in. I take pride in being the commander-in-chief. I'm a professor. The last thing I wanted, I'm a builder. But when forced to, like any other Afghan, I'm a patriot, and our forces are patriotic. There is no shortage, Safi, of recruitment. But the worst moment of my life, every day, is around 5:30 to 6. I get the casualty figures. And my heart breaks over every Afghan. I've not taken any joy over Taliban casualties because they're Afghans. Here, I see the beginning of a serious change. Implementation is going to be again critical, but I see in the Prime Minister and General Bajwa in the government a willingness to give peace a chance. We work now together. We have agreed to detail working groups, task forces to be able to get the detail right. But this is a welcome sign. हम जब भी बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से, वो हलफ की हद तक हमें ये कहते हैं कि नहीं, हम पूरी तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं अफ़गान पीस प्रोसेस को, और हम तालिबान पे अपना पूरा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो अफ़गान हुकूमत के साथ बैठें। क्या वाकई अब पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी इदारे अब ये कोशिश कर रहे हैं? I think we should look into the future. The next weeks are going to tell. But at the level of intention, yesterday we've had good meetings, and we want to build upon those because it's in the interest of the two of us. Pakistan has been a party to the war. No one can deny it. And now that its interest is shifting into the re-examination of policies that have not worked, to call failure, repeated failure, a successful policy stretches imagination. Pakistan's internal agenda, its national interest now is in a stable region, a stable Afghanistan, because that can become the source of solving and dealing with problems. What Pakistan is doing with madrasas is very hopeful. As somebody who spent 1 year in your madrasas studying the Sirah Nabi, both in Karachi and Lahore, it was inconceivable at that time that a curriculum change could happen. There are positive changes happening. It's important not to be too optimistic, but not to be pessimistic. The road to peace, as I said yesterday also, and first Prime Minister in the private, in the joint meeting, and then Mr. Quraishi, your foreign minister, in the institute, the road to peace will be bumpy. That's predictable to any process of change. It's the capacity to build trust that is essential, in knowing that we have suffered from distrust, now we are embarking on building trust. पाकिस्तान में लोग एक शिकायत करते हैं, और मैं अफ़गानिस्तान के सदर से उस शिकायत का जवाब जानना चाहता हूँ कि देखिए, सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया, अंग्रेज़ ने माजी में अफ़गानिस्तान पे हमला किया, अमेरिका इस वक्त अफ़गानिस्तान में किसी भी शक्ल में है, लेकिन कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में इतनी नफ़रत न सोवियत यूनियन से है, न अमेरिका से है, न इंडिया से है। दूसरी तरफ ठीक है, पाकिस्तान से गलतियां भी हुई है, लेकिन आज भी लाखों अफ़गानों का पाकिस्तान घर भी है, पाकिस्तान सफ़र भी है। ये पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमसे ये ख़ुसूसी नफ़रत क्यों है, या गुस्सा काबुल में क्यों होता है? Well, first, if we look forward, I think the relations can be very positive.
I told your Prime Minister, can I find another Prime Minister or President in the region whose mother and father are both from the province where my family has been for 600 years? We have a lot of bonds. Why? It's not anger, it's disappointment. ठीक. The people of Afghanistan did not expect Pakistan to be backing certain parties, to be embarking on doctrines like strategic debt, because they counted on friendship, on solidarity, on supporting the chance of the Afghan people to put an end to violence that had been imposed upon us, but violence was perpetuated. So understand, when a mother says goodbye to her children in the morning, she doesn't know whether they're going to come alive or they're going to be in pieces in Kabul. And certain parties in Pakistan support this, take credit for it, consider this jihad. Are we land of the infidels? Did we not give you Hajweri, Data Ganjbakhsh, and hundreds and thousands of Sufis? Why would you consider people who've sacrificed 1.5 million people for jihad fi sabilillah at the Soviet time to be Darul Harb? We have. So it's that disappointment. But the engagement, whatever the past has been, Safi said, I want to indicate to the government and the people of Afghanistan, I'm not wedded to the past. The Jirga of Afghanistan met 3,200 for the first time, every one of them elected. They instructed me to normalize relations with Pakistan. So the fundamental realization that Afghanistan and Pakistan are necessary to each other exists among our people. If we adopt the right policies, disappointment and anger will disappear. ठीक. पाकिस्तान और इंडिया की एक हिस्टोरिकल दुश्मनी है और इसमें भी कोई शक नहीं कि इंडिया को जब भी मौका मिला है उसने अफ़गान साइल को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। तो जो इंडिया की एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी है उस हवाले से पाकिस्तान के कंसर्न को आप कैसे दूर करेंगे? Sure. Well, the first thing is anyone in Pakistan accused the government of Afghanistan of sponsoring these activities? No. Not your intelligence, not your army, not your government. I do not have a secret agreement with anyone. Two, I'd broken my leg. I was in an operation and on stretchers. The worst bomb attack took place in Kabul. I arrived at 10 p.m. At 11, this bomb took place. Next day, I convened the National Security Council of Afghanistan and said, we are not interfering in Pakistan. It's not in our interest. Tariq Taliban of Pakistan, have we not used force against them? Mullah Fazlullah and others. In your side, you say you don't have a capacity to attack, but we, with our limited capacity, have taken it. Is any similar attack on a single Afghan Taliban taken place from Pakistan? If there are rogue elements, show them, and we will take action. But that is also an exaggeration. You know, when I used to, before I became president, there are a lot of Afghan taxi drivers and a lot of Pakistani taxi drivers. They would tell me that some Pakistani cab drivers, when they would hear that I'm Afghan, would say, there are 25 Indian consulates in Afghanistan. Let us examine this issue through any third-party verification. I invite civil society, I invite academics and others to deal. We are willing to deal with any anxieties or complaints of Pakistan, provided they're dealt with us. In the past, again, somebody from a third country said, if there is any interference in Afghanistan or from Afghan soil
First, it's not government. Second, it's at the handicraft level. But interference from Pakistan into Afghanistan is at the industrial level. Do you doubt it? नहीं, अगर इधर से ये एग्जेजरेशन है तो आपकी साइड से भी ये एग्जेजरेशन नहीं है कि सारे अफ़गान तालिबान वो पाकिस्तान की मुट्ठी में बंद है? अब क्या ये हकीकत नहीं है कि तालिबान के साथ रशिया के भी ताल्लुकात हैं, ईरान के भी ताल्लुकात हैं, बाकी ममालिक के भी है, कतर में तो वो बैठे हुए हैं? Sure. No, we don't have any problem acknowledging that they've diversified. But does anybody else provide them sanctuary? Is there a Tehran Shura? Or a Moscow Shura? Or a Mashhad Shura? You know, we need to understand, there's an organic relationship with certain elements from long period, and there are support structures. The question is to verify this and to deal with it. We are willing, and I run on a peace platform, to solve the problem politically. There's no reason for the killing. 2,906 ulama of Afghanistan give a binding fatwa, and they preaching peace. The message of us is peace. The same fatwa was endorsed in Indonesia in Makkah Mukarramah. So it's important to understand, if now that discussions are underway in peace, the offering of peace is without condition, isn't it ironic, Safi said? President Karzai had 11 preconditions. I've removed the conditions. Now Taliban are putting conditions. There is no justification for the killing of Afghans. Pakistan is now, I'm seeing serious signs of being convinced of this. We're convinced we have to take advantage of the opening to create momentum and solve the problem. प्रेसिडेंट करज़ई ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में अमन लाने में मुखलिस नहीं, वो इवन दाइश के सपोर्ट का भी उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मौजूदा प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान डॉक्टर अशरफ गनी क्या सोचते हैं? अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलना चाहता है और पीस में मुखलिस है? Oh, बिल्कुल. I worked with President Karzai. I served without receiving any payment for all my services, whether it was as chief advisor, as Minister of Finance, or responsible for trade. President Karzai was convinced that the Americans will not withdraw. They proved correct. I have enormous respect for him as president of former president. I always greet him to the door. I always see him to the door. But we fundamentally disagree because he's not examined the conditions or the opportunities of Afghanistan. He did not have a roadmap. He came to Pakistan 22 times. अमेरिका ने अफ़गान हुकूमत को बाईपास करके बराह रास्त मुज़ाकरात जब तालिबान से शुरू किए तो उसने आपकी पोजीशन को कंप्रोमाइज़ नहीं किया? No, because we have full alignment with the United States on how to move forward. There are two issues. There's one issue that they discussed, but the four issues are linked together. And on top of it, there is two other issues: drugs and the critical role of Pakistan in guaranteeing peace and being able to move forward. I persuaded the United States to remove the preconditions and to engage in the peace process. The intent is genuine. We need to work together and take advantage of this opportunity. Mr. President, वैसे तो बहुत सारे सवालात अब भी मेरे रह गए हैं ये, लेकिन आखिर में ये जो क्रिकेट अफ़गानिस्तान की टीम ने माशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में बड़ा अपनी पोजीशन और आलमी सतह पे नाम कमा लिया, दोनों का मैच हो रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या है? अगर पाकिस्तान जीते तो आपकी फीलिंग्स क्या होगी? अफ़गानिस्तान की टीम जीते चुके? Well, I cheer for Afghanistan, but I cheer for cricket. I was a sportsman. I used to run 10 kilometers. Winning in sports is not the issue, it's participation. And here we express thanks to the Pakistani trainers. Our cricket is an example of South Asian cooperation. Pakistani trainers and Indian trainers together have worked with the Afghan team to create phenomenal success. That's the way things should be. लेकिन अभी आप ऐसा क्यों नहीं करते? ये जो दोस्ती के नए सफ़र का आगाज़ हुआ है कि वर्ल्ड कप के बाद
افغانستان کی ٹیم پاکستان آ جائے یا T20 ایک سیریز ہو ایک Sports is not political. Let's make sports, let's make the economy, let's make the culture. None. لیکن آپ کی خواہش ہوگی کہ اس کے بعد افغان ٹیم آئے پاکستان اور یہاں کھیلیں. Of course. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر محمد اشرف غنی صاحب ہمیں وقت دینے اور اب سے پاکستان لوگ سے ہمارے سلام. تھینک یو جی، بہت شکریہ. خدا حافظ. ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ افغانستان حقیقی معنوں میں امن کا گہوارہ بنے، اس دعا کے ساتھ کہ افغانستان اور پاکستان دونوں حقیقی معنوں میں بھائی بنیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ افغانستان اور پاکستان پورے خطے اور پوری دنیا کے لیے امن کا، خوشحالی کا اور اقتصادی سرگرمیوں کے منبع اور مرکز بنے، آج کے اس خصوصی جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.